इट्स माई फर्स्ट फिल्म और मुझे कहीं डर भी लगता है यार कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसा होगा. आई थिंक द फर्स्ट शॉट इन द फिल्म व्हेन आई गेव, आई रिमेंबर अभिषेक सर, हिज एक्साइटमेंट एंड द वे ही लव्ड इट. इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, और ऑब्वियसली एफर्मेशन और ये सब वर्क करते हैं, बट यू हैव टू गो देयर एंड फेस व्हाट यू फियर. Hi, I'm Mohit Malik and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So as we're talking, मुझे ये जानना है Mohit, what's happening in your mind right now? क्या चल रहा है? Okay, so it's यार बहुत कुछ चल रहा है। यार बहुत कुछ चल रहा है यार. I'm excited. I'm very excited. At the same time, I don't know यार. It's my first film और मुझे कहीं डर भी लगता है यार कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसा होगा. आई थिंक वो एक एक्टर्स का इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, तो आई थिंक वो भी है कहीं ना कहीं. सो या इट्स ऑल मिक्सड अप, सो या लिविंग विद इट. We are waiting to watch. या अब एक बार आई थिंक रिलीज़ हो जाएगी तो आई थिंक ये भी सब रिलीज़ हो जाएगा. So Mohit, on the sets, ऐसा कोई सीन या कोई स्पेसिफिक मोमेंट था when you felt that you have made something different, या एक्टिंग से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है जो आप इतने सालों से करते आ रहे हो, एंड देन समथिंग अ शिफ्ट टुक प्लेस? Oh, I think the first shot in the film when I gave, I remember Abhishek sir, his excitement and the way he loved it, and he told me few things which will remain with me for a very long time. I think वो एक एक्टर के लिए वैलिडेशन कह लो, तो वो एक वैलिडेशन ही था, और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बोली, तो वो शब्द जो हैं वो आज भी मेरे साथ हैं. एंड आई थिंक फर्स्ट सीन के बाद ही ऐसा हुआ कि फर्स्ट सीन के बाद जब द मोमेंट ही सेट कट, ही लव्ड द शॉट एंड एवरीथिंग, ही वाज वेरी हैप्पी विद द शॉट. एंड आई रिमेंबर आई कॉल्ड अप Aditi and I said कि यार Aditi, I belong here, and I want to just be here on a film set. Yeah. So with this journey and what happened, everything, what will be that one advice you will give to your younger self? Sorry, come again. With all this happening, what will be one advice you would want to give to your younger self? My younger self, I think just have more self-belief, and believe in yourself, and have patience, have faith, and yeah. So जब फिल्म्स की बात होती है ना, everyone, you तो actually starting with it, but everyone talks about if the film was a success or a failure, and वो सब numbers पे आ जाते हैं everything. तो did you even think about that, or you are just going with the flow and just? It's not my job to really think about the numbers यार. My job is to actually just जो मुझे बताया गया किरदार वो ऑनेस्टी से जाके निभाना और करना. मेरा नंबर से मुझे, दैट्स द प्रोड्यूसर्स जॉब. दैट्स माई जॉब इज़ टू जस्ट डू माई जॉब जो मुझे बोला गया करने के लिए. दैट्स अबाउट इट. And with this, has the definition of success changed for you, like from when you started to now? Yeah, obviously. Success, when I started, or I would say a few years back, तक मेरे लिए success होती थी कि more money, more houses, or more cars, or more more investments and more savings. But now I think success for me is just being at peace at the end of the day, sitting on the bed with your wife and sleeping, and having a peaceful sleep. That's what success is all about, I feel, right now for me. That, एक peaceful sleep is, I think it's a boon nowadays. It's a great thing. I think वो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है अभी सब लाइफ में, कि आप शांति में बैठ के रात को I can have a conversation with my wife, and then I can just sleep peacefully. That's success for me. So is there a fear you feel that you have overcome during this journey as an actor, especially when shooting for Azan?
Did you overcome any fear as an actor? Uh, Not really. You will never. I think these fears will always come, tag along with you throughout your journey. They can never really go away. They can ebb a little bit. They can fade a little bit, faint a little bit, but they will never go away. These, these. I would say these self-doubts and this. This insecurity sometimes will always bother you somewhere here on the. It's your job how you tackle them. बिकॉज ये आप लोग हर एक्टर ये दो चीज़ें तो जेब में लेके घूमता है तो सो मेरा सबसे पहली चीज़ होती है कि आई थिंक आई थिंक फियर तो नहीं बट आई थिंक आई हैव कम आउट एज अ मोर कॉन्फिडेंट एक्टर आफ्टर दिस फिल्म बिकॉज when I came to Bombay, I remember I was not that confident enough, and I think only thing which has worked for me to gain confidence in life and in myself and in my craft is actually doing the work. So अगर कोई सुन रहा है और कोई अगर किसी को मैं राय देना चाहता हूँ कि अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो just do what scares you and do the work. It's not going to happen overnight. और obviously affirmation और ये सब work करते हैं, but you have to go there and face what you fear, and then only you can actually overcome that. Yeah. So if I may ask you, what is that one misconception about actors जो you will want to clear up? One misconception about actors. या मतलब लोग ये सोचते हैं कि कि एक्टर बनना बड़ा आसान है और आई थिंक सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है और जो दिखता है कि द लाइफ्स दे लिव सच अ लैविश लाइफ बट इट्स नॉट ईजी यार एज बाकी जॉब्स की तरह एक्टिंग तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे टफ जॉब है एक एक्टर बन के रहना तो मिसकंसेप्शन यही होगा कि लोगों को अगर लगता है कि ये कि बहुत आसानी से हो जाता है सब कुछ तो नहीं प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है मतलब अभी भी मतलब आफ्टर वर्किंग फॉर 19 years आई वुड से दैट आई हैव रीच्ड मैंने एक्टिंग का ए सीखा होगा और it's so much, it's so vast, it's an abyss, it's just endless, it's infinite. It's actually, there is no end to, obviously there's no end to creativity, but there's no end to learning. We are still learning, and nobody really becomes an actor. Everybody is becoming an actor. Also, when you'll watch Azad for the first time, will it be as an audience या फिर like an actor? Like an actor, obviously. And then you'll pinpoint all the things, ये ऐसे करना चाहिए था ये वैसे पता नहीं मैं शायद अपनी आँखें बंद कर लूँगा मुझे नहीं देखना I don't know so but I will see as an actor and there are a lot of other things which goes into the movie business. I feel it's not just your craft. I think it's about the background, it's about the world, it's about the clothes, it's about everything coming together at one page. It's about the director, how is he cutting the scene, how is he so I have to see it and so let's see how kitna, because you have to make it impactful honestly. When I dubbed for it, it was without any background but I liked it. But now let's see अभी final product क्या आता है. Right. So all the best for this.